अछि हैला इंस्पेक्टिंग स्टाफ रे कोन अछि चैप्टर 2 रे इंस्पेक्टर पावर ऑफ द इंस्पेक्टर एंड सर्टिफाइंग सर्जन जोटा कि ऑलरेडी हमें काले डिस्कशन करिचे इंस्पेक्टर chief inspector additional inspector appointed by the respective state government as per the local limit ठीक है सो से अनुसार आसीबे तांको पावर होची बहुत vast power से माने के आसंती and certifying surgeon is a qualified medical practitioner like a doctor right so appointed by the state government ठीक है तो चलंतु एमानकर पावर बहुत आउ एमाने हेले appointed by the respective state government. Apart from this also we have discussed health facility the facility as per the Factory Act 1948 what are the facility related to health how the healthy environment should be there in the factory for that Indian Constitution designed section 11 to section 20 different sections सुनो पिला माने एठी गोटे कथा कहूची ध्यान रे सुनो धरंतु आमे तो एठी पढी देले section 11 to section 20 cleanliness स्टेप बाय स्टेप लिखाई छै आगे क्लीन करिबा तापरे डिस्पोज करिबा हैला तो ए अनुसार जो अछि धरंतु आपन को एग्जामिनेशन रे एग्जाम टाइम रे आपण मानन को तेमति मने पड़ी न पारे कोन मन न पड़ी पारे क्लीनलीनेस हला 11 सेक्शन डिस्पोजल ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हला सेक्शन 12 मने पड़लानी तो कोन करिवे तो सेठी कोन करिवे आपण को जति ये कोन कहिले आपण जति एरिया रे काम करछन्ती ताहले आपण को ए अनुसार मन रखिया पड़िबो जति एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रो आपण कोन करिवे हेल्थ धरंतु आसला कि briefly explain the health and welfare facility provided by the Factory Act 1948 हैला तो आपण कोन करिवे ऊपर हेल्थ कहि करी हेडिंग दे देबे हेडिंग दे देले दे कि ए सब हां हेडिंग रे कोन करिवे से लिखि देबे सेक्शन 11 टू सेक्शन 20 एति कि तो मने रहिबो हेल्थ ऊपर हेडिंग दे देबे ए जेमते एठी हेल्थ लिखा आइछ प्रोविजन रिलेटेड प्रोविजन रिगार्डिंग हेल्थ तो एठी कोन करिवे सेक्शन 11 टू सेक्शन 20 लिखि देबे एठी आ सेक्शन ना को न लिखले भी चलिबो हैला लिखि दे कि आको कोन करिवे जति कि माने जति कि नै सब लिखिबे ऊपर तळ हेले भी चलिबो हैला जेमति कि क्लीनलीनेस डस्ट एंड फ्यूम्स लिखिले तापरे ओवर क्राउडिंग लिखि देले हैला तो एटा हेले भी इट कैन बी मैनेजेबल आपण पूरा तो जदी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू रु कहबे तो आपण को सेति पे सेक्शन करछि सजेय कि रखछि किंतु also आमे एटा को मध्य मैनेज हेई पारिबो सेमति किछि माने एते भी ये नु बुझिलो ना पिला माने सो सेते बेले सेक्शन आको मने न पड़ी पारे तो आपण माने आको ए अनुसार एग्जाम रे अटेंड करि पारे इट कैन बी एक्सेप्टेबल हैला क्लियर ना एतरे टिके इजी लागिबो सो सेति पे किछि आपे वरीड हबा दरकार नै हैला किछि वरी ना आराम से कुल्ली करंतु हां एते भी माने ये नहीं किंतु पर्सनल जते एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू माने यदि कॉम्पिटिटिव वगैरह प्रिपेयर करचंती को माने पिला माने ताहले आपन को एई वाइज ही मन रखिया पड़िबो एई थ्रू टिके पर से पटेले भी हबनी किंतु एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पाई बोली एमबीए एग्जाम पाई आपण ए अनुसार प्रिपेयर करि परबे डोंट वरी अबाउट दैट हैला चलंतु कोन करबा ना हमें जिबा चैप्टर 4 सेफ्टी फैसिलिटी एटा खाली ना सेफ्टी टा बहुत बड़ अछि चैप्टर टा आरे ना को खाली आपण बड बड लागिवो किंतु जिंस माने जोटा कि प्रोविजन आक अछि एते भी डिफिकल्ट न हैला नेम आक खाली हम टिके मन रखिया पड़े सो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 4 provision regarding to safety facility what it including see safety facility it relates to chapter section 21 to section 41 section 8 section 9 section 10 it related to basically appointed by the state government in a different area as a inspecting staff and वगैरह and section 11 to section 20 it related to health section 20 जोठी सरीला section 21 safety start हला so section 21 to section 41 it covered was the safety facility now what it including आपण को देखो first section 21 it covered fencing of machinery now fencing of machinery it implies गोटे गोटे लाइन रे कहि कहि भी ध्यान रे सुनी हला fencing of machinery it implies those machineries are there in a factory the factory have to installation means the factory have to analysis properly whether the machineries are there in a proper installation proper working condition or is there or not
इट मीन्स फेंसिंग जो फैक्ट्री जो मशीनरी सब अच्छी प्रॉपर ठीकली अच्छी ना नहीं प्रॉपर इंस्टॉलेशन होइछि ना नहीं सेटा देखिबा फैक्ट्री रो रिस्पांसिबिलिटी सेक्शन 21 सेक्शन 22 वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन मोशन मीन्स व्हाट मोशन मीन्स अ मूविंग कंडीशन मूव करूथबो जोटा कि हैला मोशन मूव एम्प्लॉय माने मूवमेंट करन ताको मोशन कहा जाय एडी मोशन किए करूची मशीनरी मोशन करूची मूविंग ऑफ द मशीनरी राइट हियर टू देयर so those machineries are there in a motion condition movable condition in that particular area nobody is allowed work on or near sei pakhare sei machinery pakhare on means tar area bhitare kehi bi allowed nuhanti right nobody is allowed in that particular area those machineries are there in a movable condition motion condition employment of young person on dangerous machines it means young person first who is the young person a person either child or adolescent we can call as a young person child strictly prohibited already child labor regulation abolition act 1986 said no no child will work in the factory factory konosi child work kari paribe nai ta mane eti ame kaha gu naba only the person 15 to adolescent ku hi ame eti naba adolescent kiye a person who have not complete who have completed 15 years of age but not completed 18 years of age सेटा ame young person रे कहबा young person किए ना 15 रु 18 ही ame ना नहीं परिबा तो एठी कहला employment of young person on dangerous machinery young persons are strictly prohibited in front of the dangerous machinery they cannot work in front of the dangerous machinery because they are unable to work 80 गोटे जिनस कहूँ स्टूडेंट्स those are the young person जो माने young person ताको किए सर्टिफाई करिबो ना certifying surgeon will certify issue a token to the young person whether the young person is eligible in that particular area or not so the height weight the physical strength and fitness of the young person the certifying surgeon will issue the certifying surgeon will certify the particular person so basing on this the person will work in a factory but in front of the dangerous machinery maybe the young person is fit maybe the young person is a basically the person can work in a factory but in front of the dangerous machinery this young person is strictly prohibited se Ma'am, kamo the kari young paribo person, ma'am, here the young person is from 15 to 18 years. Young person is not सुनो allowed to the dangerous area. ना सी कौन कहूची कि हु फर्स्ट हैला हु इज यंग पर्सन हमर डेफिनेशन रे अछि इंपोर्टेंट डेफिनेशन रे हु इज यंग पर्सन मींस अ पर्सन एइदर चाइल्ड और एडोलसेंट ताको हम यंग पर्सन कहबा चाइल्ड के मु कहली अगेन चाइल्ड के ना जे के 15 इयर्स कंप्लीट करिनी ताको चाइल्ड कहबा तो एठी तो हम चाइल्ड को नबानी पिला माने काहे के नबानी ना चाइल्ड को तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली बंद कर देला हैला तो आम यंग पर्सन ये जन को नबा जे कि 15 वर्ष कंप्लीट कर देछि कि 18 वर्ष कंप्लीट करिनी ताको आम यंग पर्सन हैला यंग पर्सन माने काम फैक्ट्री करि परिबे कि न करि परिबे वेदर द यंग पर्सन विल वर्क इन अ फैक्ट्री और नॉट दैट डिसीजन टेकन बाय द सर्टिफाइंग सर्जन से डिसीजन नबो हैला सर्टिफाइंग सर्जन कोन करिवो सर्टिफाई करिवो टोकन इश्यू करिवो ना लोक एई पिलाटा काम करिया पय फिट अछि हैला तो सी काम करि परिबो किंतु in front of the dangerous machinery dangerous माने कोन कहलो टिके hazardous condition थिबो जोटी कि सेडी बहुत critical work होतबो so in front of the dangerous machinery that person is completely not allowed से फिट थिले मध्य काम फैक्ट्री करथिले मध्य सेही मशीनरी फ्रंट रे यंग पर्सन को पठा जिवो नाही ताहले मैम से के काम करिवो only the adult people who has completed 18 years of age से माने ही काम करिवे बुझिले ना जियो एना बुझिले ना मैडम Yes, ma'am. Yes, ma'am. हां हां हैला मने रखिबे यंग पर्सन को ओनली सर्टिफाई करिवो सर्टिफाइंग सर्जन तार हमें चाइल्ड को एठी नबानी हमें नबा एडोलसेंट को सेडा हला यंग पर्सन 15 टू 18 कंप्लीट करि नथिबो किंतु से सब जगह रे काम करि परिबो सेति पय सर्टिफाई करा जायछि ताको किंतु सी डेंजरस मशीनरी फ्रंट रे काम करि परिबो नाही हैला ता करू कोन होई जिवो मरि जिवो हैला तो सेति पय हबन तापर चलंतु स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइस for cutting of power और वर्ड को मन रखुथिबे
हैला देखो तो एठी कोन कहला पावर पावर माने कोन पिला माने पावर मींस आम पावर नो हमर एनर्जी नो ना पावर मींस इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैला मु डेफिनेशन रे पढैतिली विथ द एड ऑफ पावर विदाउट एड ऑफ पावर हैला मु सेठी पढैतिली तो एठी पावर हैला इलेक्ट्रिकल एनर्जी कटिंग ऑफ पावर ऑफ ओएफएफ ऑफ एठी ओएफ नहीं कटिंग ऑफ माने स्विच ऑफ करिबा कटिंग ऑफ पावर ता माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें बंद करिबा तो से कौन कहूची स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइस फॉर कटिंग ऑफ पावर the factory have to provide the in a different area so inside of the machinery dangerous machinery in the area in the hazardous area so the striking gear should be there and device should be there so in case of any emergency the person can cut the power as soon as possible quickly we have to cut the power for example jodi ame ethi naba ma'am example hela am ghar ro main switch hela आम घर मेन स्विच टा आमे जेमती इमरजेंसी केस रे आमे चटापट जाई आगे मेन स्विच किछि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हैला आम घरे हैला चटापट जाई आमे कोन करछ आगे मेन स्विच को ऑफ करूचे ता माने हमर सब प्रॉब्लम से सॉल्व जेमिति सो एठी कोन करबो फैक्ट्री हैव टू प्रोवाइड दैट प्रोविजन nearest the machinery so any kind of problem will be there so they can take the quick step and of the power हैला दैट इज अ स्ट्राइकिंग गियर खाली नेम आ कहिए किंतु काम हैला हम घरे जा से नेम को टिके लॉ वर्ड खाली यूज करा जाय हैला दिस इज सेक्शन 24 डियर स्टूडेंट तापर चलो तो सेल्फ एक्टिंग मशीन माने कोन ना सेल्फ एक्टिंग मशीन मींस द मशीन विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट होत सेल्फ एक्टिंग जेमते आमे सेल्फ एक्टिंग पर्सन ता माने कोन आमे निजे निजे काम करछ मशीन तार निजे निजे काम करबो मैम ताले कोन हबो no if the machine is a self acting machine so nobody is allowed in front of the machinery neither woman nor young person only the adult experienced qualified adult person with a tight fitting dress the person can allowed in that particular area only adult person say area ko allow kara jibo if the machine is a self acting machinery then chalantu casting of new machinery Cashing of new machinery, section 26. Cashing means what? New machinery. So it I'm starting fencing of machinery. जो already factory अच्छी. आमे गोटे नुआ machinery आनले. New machinery आनले ताको आमे installation करिबा. So if the machinery is new and at the time of installation, the installation process must be means it must be there in a perfect manner, no? So जते सब नॉट बोल्ट any kind of belt any kind of wheels any kind of whatever maybe the things is there it must be installed in a perfect manner so what happened so in future any kind of problem the machinery will not means the people will not face any kind of problem while they will work in front of the machinery and the machinery will also not create any kind of problem so casting of new machinery machinery it must be installation or cast properly right then prohibition of employment of women and children near curtain openers it means prohibit karagala kahaku women ko as well as the children ma'am child labor regulation abolition act pra child को ban कर देची हाँ ban कर देची तो आमे इठी जदी बैन कर चाइल्ड तो काम करि परिबोनी ताला आमे वुमेन को नबा आगुरु थिला चिल्ड्रन सेति पय 1948 रे वार्ड थिला हैला आजि का डेट रे तो चाइल्ड नाही चाइल्ड काम करि परिबेन ताला आमे वुमेन को नबा वुमेन तो काम करिवो तो एठी आमे कोन करिबा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन नियर कर्टन ओपनर्स मींस जोठी की एनी काइंड ऑफ डेंजरस कर्टन प्रेसिंग ओपन सिस्टम थिबो जोटा की बहुत डेंजरस वर्क होतबो जोटा की it is unable to the women worker unable to work in that particular area so for that reason the women worker it is strictly prohibited in that particular area then hoist and lifts section 28 hoist and lift hoist माने कोन मैम hoist हैला जोटा की आमे जिंस को नोथबा जिंस हैला lift माने कोन लोक माने मूव करथले through hoist जोटा की through lift a person can move जोटा कि हमर सब आमे जानि छी चारिटा में लिफ्ट रे जाउ छी थ्रू होइस्ट कोन हबो ना थिंग्स कैन मूव जते सब माने कोन कहिला ऑर्गेनाइजेशन रे सब जिंस को मूव करा जाउ तो एठी कोन करा गला होइस्ट एंड लिफ्ट both the hoist and lift it must be there
the factory have to देखो हम जितने लिफ्ट रे जाउचे से लेखा जाइथिबो देखुथिबो 5% allowed हां एत्तिकी केजी allowed एत्तिकी जिंस allowed तार अधिक नेले कोन हबो लिफ्ट मूव करबोनी नले भांगी जिवो तो कोन करा जिवो इति से कोन कहूची ना होस्ट एंड लिफ्ट कहूची कि as per the requirement of the in case of the as per the means in case of the hoist as per the requirement we have to give the things towards the hoist and as per the, in case of lift as per the jetike weight tar ojon sambaliba sakti che ame setike provide kariba and the hoist and lift it must be checked time to time amaro jo flat re achi lift amar taku AMC रे दे देछु annual maintenance scheme रे सी तार time to time आसी कि सी तार पूरा टिप टप करके पूरा लिफ्ट को पूरा जाउची से हमरो मुंड पुरेवा दरकार नै हमें ताको पैसा दउछु से आसी कि तार देखिला हला तो एठी कोन करा जाउची कि होस्ट एंड लिफ्ट स्पेसिफिकली check time to time so that नले कोन हबो लिफ्ट रे जाउथबे लिफ्ट भांगी जीवो होस्ट जाउ जिंस जाउथबो ये ही जीवो नष्ट ही जीवो so it must be checked time to time so that it can maintain properly and people will not face the problem right lifting machines and others lifting machines and others माने कोन ना जोटा की सेटा हला section 29 lifting machine and others it implies those are the things related to lift and hoist already I told you so it must be checked time to time आमे ताको time to time check करिबा कोन check करिबा तारो rope ला कि तारो तार कौन सी प्रकार इंस्ट्रूमेंट्स है जमती कि नॉट्स बोल्ट सब जिंस को टाइम टू टाइम चेक करके लिफ्ट एंड होस्ट को प्रॉपर फिट कंडीशन रे रखा छिबा दरकार हैला तापरे चलंतु रिवॉल्विंग मशीनरी सेक्शन 30 से रिवॉल्विंग मशीनरी कौन ना रिवॉल्विंग मशीनरी we can take the example of grinder right revolving machinery the movement of the revolving machinery you can think about the situation like a grinder no grinder jette speed re move करे revolving machinery same rate रे move करिबो और same condition रे move करे ताठो री पॉजिटिव right so grinder रो जो condition revolving machinery रो same condition so if the revolving machinery it is there in a working condition then in front of the revolving machinery neither young person nor women are allowed only the adult people are allowed in that particular area and the adult people also the trained adult people the experienced adult people in front of the revolving machinery because it is one kind of dangerous machinery right चिंता करंतु ग्राइंडर रे हमें काम करछे ग्राइंडर टा छोटटा एटा गोटे विराट काय मशीनरी थिबो जोथिरे कि से काम करा जाउथबो सेइथिरे जदि गोटे लोक टिके छोटरू भी भूल हे गला कोन सिचुएशन ऑफ यू थिंक अबाउट दैट राइट से जो एइना मझिरे न्यूज रे देखौतला आगुरु हमर कोन होतला धान कटा मशीन आ धान ए जो हमर ये कोन कहिले ताकु जो सफा करा जाय काटिबा पई आ सफा करिबा पई दीटा को आगुरु लोक माने हाथ रे करथले से सब आगो तेतला मैनुअल थिला आज का डेट रे तो तापे मशीन पळे आसला जोटा कि ह्यूमन पावर ह्यूमन एनर्जी हमें मास यूज करथले सेठी गोटे दिन रे काटिबा सहित सफा भी हिजिबो हैला जोटा कि मासकर ह्यूमन एनर्जी हमें गोटे दिन रे मशीनरी ताकू कर देला वेल बहुत बढ़िया काम सेठी किंतु तमे एते केयरफुली करिया पड़िबो जदि छोटो माइनर मिस्टेक सेतले तो मैनुअल मासे जाउतला लोक मानकर कोनोसी प्रॉब्लम होनोतला गोटे छोटो माइनर मिस्टेक लाइफ ता पूरा माने कोन होइचिबो तमे माने यू कांट इमेजिन तो मझिरे न्यूज रे देखोतला गोटे लोक सेथिरे पकेला आलू धान पको से पसी गला से मशीन भीतर तो कौन सिचुएशन मन छिट हे गला पूरा माने बॉडी एंटायर हैला तो सेटा हला देखि परिबो माने थिबो ऑलरेडी हमर ये रे तो एटा हला सिचुएशन रिवॉल्विंग मशीनरी सो जो रेट रे से रिवॉल्व करथबो छोटो गोटे मिस्टेक पई लाइफ टा पूरा चली जिवो लोकर तो सेथि पई सेठी पूरा केयरफुली आउ ट्रेंड पर्सन को दिया जाए प्रेशर प्लांट कौन पिला माने प्रेशर प्लांट सी प्रेशर प्लांट is a plant it is always there in a hot kind of environment means if the normal temperature is 20 for example mo kochi normal temperature is 20 then in the pressure plant the temperature is just double it means it is a highly hot environment in case of the pressure plant right तो
जदि आमे आमे जाइथिलु गोटे इंडस्ट्रियल विजिट स्टूडेंट मानकु नै कि हैला रोहित फेरक्रम कहि करी जाजपुर रोड रे से जो प्रेशर प्लांट से सब आगे जो फैक्ट्री में जहाँ सब देखो पढ़ौची ना सब जिनस अपन से सब देखि पारिबे आमे जाइथिलु नालको से रोहित फेरक्रम हां ए सब जो जाइथिलु से जनरली अपन रियली रे सब देखि पारिबे से जो प्रेशर प्लांट बहुत दूर लोक बैन कर देथिबे लेमन पॉइंट ऑफ व्यू जदि आमे जो जाइथिलु इंडस्ट्रियल विजिट रे बहुत दूर बैरिकेड लगा जाइथिबो जोटा कि आपण बहुत दूर ताकू देखिबे कारण आपण सेठी की गला माने निजे सेठी बॉयल हो जिवे कैन नॉट टॉलरेट दैट एटमॉस्फियर right it is highly means hot environment we cannot tolerate that right जोटे कि हमें संगे संगे हम स्किन को इफेक्ट करके बॉयल कर दबो इसी टाइम रे हमें पूरा बॉयल मैम ताले से लोक माने केम हाउ द वर्कर्स आर वर्किंग देयर फॉर दैट इन केस ऑफ प्रेशर प्लांट कूलिंग फैसिलिटी कूलिंग चैम्बर प्रोवाइडेड बाय द फैक्ट्री समान को कूलिंग चैम्बर सब दिया जाय से कूलिंग चैम्बर रे रही कि समान ऑपरेट करथिबे प्रेशर प्लांट को प्रोवाइडेड बाय द फैक्ट्री आ फैक्ट्री दबा पाई बाध्य सेति पाई 1948 फैक्ट्री एक्ट आसे दैट इज सेक्शन 31 ठीक है चलो फ्लोर स्टेट्स मींस और आसिस आ माने कोन सेक्शन 32 सी आमे फ्लोर स्टेट्स को ऑलरेडी पढ़ी छ हेल्थ रे फ्लोर स्टेट्स को जी एवरी फैक्ट्री दे शुड क्लीन एवरी डे विथ स्वीपिंग एंड मोपिंग फ्लोर staircase corridor open area everything it must maintain clean and hygiene every day that is the meaning of देखो के गोटे खटखट कला ना ऑन हवा मझरे 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 टिके माने कोन कहले एते नल भल लागे ने पिला मानन को हैला जियो किए ना पुओ किए से टिके एपटे देखि से पटे कर हैला फ्लोर स्टेस मींस एंड एसेस so it कोन होची ना it must be maintained clean and hygiene so we can avoid certain kind of what धरंतु staircase रे oil पडिची गोटे वर्कर जिंस नै की गला खसी की पडिबो त माने कोन हबो पूरा तो भांगी जीवो तो ए सब को हमें सब बेले मेंटेन करिबा pit stumps in floors and others opening in floors and others आ माने कोन कहूची मैम pits कोन stumps कोन देखो तो pits हमरो गोटे स्टोरी हेतिला भलो बाबर आपण मान जानथिबे से गोटे पिला को रेस्क्यू करा गला उत्तराखंड ना उत्तर प्रदेश ना झारखंड ना कोठी गोटे सिचुएशन थिला जो गोटे खात खोली देथिले पाइप ये पाई बोली बोरबिल पाई बोली गोटे पिला जोटा कि ताको सुबा जाउनी कि से कथा कहि पारनी बसी गला जोटा जाई कि ता पई पूरा स्वर्ग मर्त्य पाताल गोटे कर देला हम गवर्नमेंट फाइनली सक्सेसफुल रेस्क्यू करा जायतिला पीट सेटा को कहै जिवो जोटा कि बोरबिल टाइप रो खात खाल थिबो बोरबिल खोला हिथिबो खाल थिबो से भितरे गोटे लोक जाई पसी जिवो जोटा कि से पिला को रेस्क्यू करा गला फाइनली से पिला आज पर्यंत बहुत बेस्ट ईयर अछि पूरा एयरफोर्स आसी गला ता पे आर्मी आसी गला ता पे सब आसी गले जियोलॉजी वाला आसी गले ज्योग्राफी वाला आसी गले समस्त आसी गले पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्वॉल्वमेंट हैला से पिला को बाहर कला फाइनली सक्सेसफुल रेस्क्यू करा गला जोटा कि हमें भी समस्त दिन राती एमती बसी टीवी रे देखुते कोन हैला केते टाइम गला राइट सेटा हला पीस सम्स कोन सम्स हला पानी टैंक व्हाट सम्स जोटा हमें कहबा सो सी कम कहले इन फैक्ट्री ओपनिंग फ्लोर्स in neither in the means ground floor nor in the top floor kouthi be neither pits nor sumps it should not be there in an open condition it means what if the pit sumps is there it must be covered properly or else kon haba ame live example dekhiche jota ki sei jo झारखंड ना कोठरे से पिला को केमती कोन करा गला फाइनली जहा हो से पिला बंची गला हैला एटा तो हमें गोटे स्टोरी देखले एमती तो हजार हजार स्टोरी होउची जोटा कि टीवी भी कवर करि पान तो डियर स्टूडेंट्स एटी कोन कहा गला सो एवरी फैक्ट्री इट मस्ट बी कवर प्रॉपर्ली नहले कोन हबो हमें ऑलरेडी जानि जे एक्सेसिव वेट कोन ना देखो होएस्ट रो जेति की कैपेसिटी as per the capacity of hoist as per the capacity of the lift as per the capacity of the person we have to give the things more capacity I can move केते मैनेज करि परिबी धरे 10 kg मते 20 के 15 kg दिया जिवो मूव करि परिबी नो बियॉन्ड माय कैपेसिटी लिफ्ट रो कैपेसिटी हैला 5% सेतरे 10 जन माने हम जे कि
ये करबा मूव करबा ताले कोन हबो लिफ्ट भांगी जबो समस्त इंजर्ड हबा होस्ट रो जति कैपेसिटी मोर देन दैट दबो ताले कोन हबो होस्ट जीव सब नष्ट हबो जिंस सो से कोन कहूची एक्सेसिव वेट it strictly prohibited in case of lift in case of hoist in case of a person लोक मध्य आमे ताकू दबा नाही हैला protection of eyes section 35 said protection of eyes section 36 said precaution against dangerous fumes gas and others protection of eyes those person पिला माने किए गोटे पिला म्यूट करो protection of eyes मते पुणी सेटिंग जाय कि मो म्यूट करबिनी निजे निजे पिला माने डिस्टर्ब करेनी म्यूट कर दियो protection of eyes तो एठी कम करा जिवो ना those persons are working specifically in front of the fire front रे जो माने काम करती so the factory have to protect their eyes so that because it is a precious part of the human body eyes so those persons are working nearest the fire in front of the fire so it is a responsibility of the factory should protect the person so that type of instrument that type of things the factory should provide माने देखि पारथु एमति सब जिंस आग दिया जे काई कहलो जदि फायर हैला हमर जो माने फायर फ्रंट रे काम करती एमति ग्लास ये करिकी ए सब समान को दिया जाइथिबो देखुथबो समान रास्ता साइड रे कोलालु आयरन मेल्ट करूथिबे एमति सब पिंदी की सब आयरन वगैरह सब मेल्ट करथिबे हैला सो सेइथि पई हम आखी को कम करि परबा प्रोटेक्ट करि परबा तापरे कोन हैला precaution against dangerous fumes gas and others precautions dangerous gas fumes ala धुआं gas हमें जानी छे गोटे एग्जांपल हमें नहीं परिबा कोन भोपाल ट्रेजेडी जोटा कि गोटे डेंजरियस गैस पाई छोटो गोटे गैस लीक पाई भोपाल रो ट्रेजेडी कोन हेतिला द लाइव एग्जांपल इज देयर सेटा सबुटो गोटे माने आजिका डेट रे हमें कहिबा सेमिटारो बहु जगह होची पर्टिकुलरली बट भोपाल सेटा गोटे बहुत बड़ हाईली डेंजरियस ट्रेजेडी थिला नो भोपाल ट्रेजेडी सो गैस लीक पाई कोन हेई गला गोटे पूरा एंटायर आजिका डेट रे भी सेठी विकलांग लोक माने छुआ ये होचन आजिका डेट रे भी सेठी गच्छ होनी आजिका डेट रे भी सेठी कोनोसी प्रकार माने ये होनी माने फार्मिंग वर्क होई पारुनी एमिति आजिका डेट रे भी डिस्ट्रॉय हेई गछि से एरिया राइट छोटो गोटे भूल पाई फैक्ट्री रो कित्ते लाइफ चली गला कित्ते लोक मरि गले पोको माछि पेरे राइट सो सेटा हला माने कोन ना प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस गैस फ्यूम्स जेमति किछि अछि ताले आगुआ प्रिकॉशन नेकी ताको स्टॉप करिबा एक्सप्लोसिव और इनफ्लेमेबल डस्ट गैस एक्सप्लोसिव और इनफ्लेमेबल ता माने कोन देखिबे फॉर एग्जांपल जो हमरो ये टैंक जाउथबो कोन कहिले पेट्रोल टैंकर जाउथबो टैंक रे इंस्टॉल माने अनलोड हबा पई हैला तार पछरे देखिथिबो चारियाडे लेखा जाइथिबो इट इज हाईली एक्सप्लोसिव एंड इनफ्लेमेबल लेखा आइथिबो एक्सप्लोसिव एंड इनफ्लेमेबल कारण तार संसर्श रे जे जीवो तो जो छोटो गोटे किछि हला पूरा से होची पूरा की एटम बम कहिले से सबुट बड़ जोटा से होची सेटा पूरा गोटे ओडिसा को डिस्ट्रॉय करिया पई से माने काफी हाईली से सब ये हैला जेतले से टैंकर कोठी गोटे पड़ी जाइथिबो पूरा सब एरिया को गवर्नमेंट कोन करियो फटाफट इलेक्ट्रिसिटी सब बंद कर देबो लोक जीवा बैन कर देबो कारण लोक बहुत दूर रे बाइक रे जाउथबो से ताको टाणी के नेगी से ब्लास्ट कर देबो सो इट इज हाईली सेंसिटिव हाईली एक्सप्लोसिव और इनफ्लेमेबल तो एठी हमें कोन करिबा ना इफ इन काइंड सच काइंड ऑफ डस्ट एंड गैस इज देयर सो इट मस्ट बी मेंटेन प्रॉपर्ली जोटा कि हमें ताको बहुत भलो भाबरे मेंटेन करबा दरकार हैला प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर तापरे हमें जानी छे प्रिकॉशन हमें फायर हमें कोन करबा जोटा कि प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर को प्रिकॉशन करिया पे कोन करबा आजिका डेट रे गवर्नमेंट कंपलसरी कर देला फायर इंस्ट्रक्शन हमें कोन करबा इंस्टॉल करबा फायर पाई बोली हमें वाटर सप्लाई पाई बोली माने पूरा एंटायर बिल्डिंग को जेमति पाइप कवर ही पातबो वाटर ये ही पातबो राइट से टाइप रो पाइप थिबा दरकार जोटा कि किछि फायर हला चटापट हमें सेटा को स्टेप नहीं परिबा ता पाई बोली फायर पाई बोली जोटा कि ये करिया पाई ता पाई मशीनरी सब आसी गला सो बहु जिंस गवर्नमेंट कंपलसरी कर देला नो टू कंट्रोल फायर इन केस ऑफ इमरजेंसी देखि चंती सम हॉस्पिटल रो ट्रेजेडी कोन हेतिला हां
पूरा फायर पाई बोली सम हॉस्पिटल केमती पूरा जली गला सब आईसीयू वेंटिलेटर रे लोक माने केमती सब माने ट्रीटमेंट पाई जाइथिले पूरा कोन कंडीशन समानकर हैला समस्त डेथ को चली गले सामान्य गोटे फायर पाई माने सामान्य नहीं फायर टा सामान्य नहीं सामान्य गोटे भूल पाई मिस्टेक पाई राइट एमती जे देखुथिबे छोट छोट मिस्टेक पाई केमती सब जली जाउची जिंस आग तो एठी कोन कहा जाउची ना प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर इंस्ट्रूमेंट रखिबा रिमूव करिबा पाई फायर को कंट्रोल करिबा पाई वाटर थिंग्स थिबा दरकार हां इमरजेंसी डोर थिबा दरकार सब मेडिकल मानक देखा ये थिबो इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी डोर इज देयर सो से सब को हमें रखिबा स्पेसिफिकेशंस हमें कौन करिबा ना स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी इट मींस व्हाट ना इफ इन अ फैक्ट्री एनी काइंड ऑफ डिफेक्टिव पार्ट इज देयर डिफेक्टिव पार्ट गोटे फैक्ट्री रो कांथटा पूरा वीक अछि फैक्ट्री रो छतटा पूरा वीक अछि फैक्ट्री रो इट मे बी द किछि गोटे एरिया वीक अछि so if that we have to declare as a defective part and nobody should work in that particular area why ना जेतेले काम करिवे कांथ फुसली जीवो छात पड़ी जीवो राइट एमती बहुत सारा फैक्ट्री गवर्नमेंट बैन करछि जोटा कांथ छात पड़ी लोक माने से भितर चापी हेकी सब रहि गले राइट तो सेहिति पई बहुत सारा फैक्ट्री को गवर्नमेंट कोन करछि सीज कर देछि टोटली परमानेंट सीज कर देछि right तो सेहिति पई कोन करा जिवो if it is a defective part over a factory it must be identified and it must be closed that particular area then safety building and machinery entire building must declare as a safety building and machinery it is also there in a कोन safety conditions आको के डिक्लेयर करिवो ना डिक्लेयर बाय सेफ्टी ऑफिसर्स के डिक्लेयर करिवो सब मशीनरी ठीक अछि सब बिल्डिंग ठीक अछि everything is okay in a tested okay condition who will declare safety officer now who is a safety officer is a person basically no if in a factory more than 1,000 workers are working हजार अधिक लोक काम करछन्ती गोटे फैक्ट्री रे more than 1,000 workers are working then the factory have to appoint one safety officer ma'am ताहले जदि 1,000 रो अधिक हेले गोटे सेफ्टी ऑफिसर आसीबे ताहले 1,000 रो कम हेले कोन सेफ्टी ऑफिसर रहबेनी नो इफ less than 1,000 workers are working over a factory then safety officer it is not necessary now who will take care section 21 to section 41 if the safety officer is not there this is the responsibility of the occupier will take care the entire things that is a responsibility of the occupier but if more than 1,000 workers are there then we have to appoint one safety officer so ma'am जदि 10,000 लोक काम करछि केतरा सेफ्टी ऑफिसर रहबे द कैलकुलेशन इज देयर डियर स्टूडेंट्स राइट वन सेफ्टी ऑफिसर फॉर 1,000 पर्सन more than 1,000 person one safety officer 1,000 to 5,000 na 3,000 one safety officer more than 3,000 another safety officer एमती करी करी का जत्ते लोक बढ़ी चंती सेते सेफ्टी ऑफिसर बढ़ी बढ़ी का जिवो हला सेटा कैलकुलेशन तार पूरा अछि केते लोक रे केते सेफ्टी ऑफिसर रहबे but it is more than 1,000 and safety officer को क्या अपॉइंट करिवो safety officer मने रखिबे जिंस सब एठी safety officer appointed by the state government will basically appoint a safety officer notification in the official gazette जो माने HR स्पेशलाइजेशन नहीं चंती से माने सेफ्टी ऑफिसर पई आउ हेला कोन कहिले वेलफेयर ऑफिसर पई समान सब एलिजिबल काहे कि ना से माने से एरिया रे सब काम करथिबे तो गवर्नमेंट जतले नोटिफिकेशन करिवो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करिवो कोडी ना नोटिफिकेशन करिवो ऑफिशियल गazette रे करिकी गवर्नमेंट कोन करिवो सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करिवो and the rules regulations salary fixed by the government but appointed the safety officer will appoint in a factory and salary provided by who will give the salary government will not give the salary that is not responsibility of the government will only give the notification appointment of the safety officer salary provided by the safety officer salary will provide by to the safety officer it is a responsibility of the occupier 1,000 रु अधिक हो गला माने गवर्नमेंट को लोक अछंती माने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करिवो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दबो एडवर्टाइजमेंट करिवो 2-3 टा न्यूज़पेपर रे लोकल एंड नेशनल न्यूज़पेपर करिकी देन सेटु कोन हबो इंग्लिश आ ओडिया करिकी कारण हमर ओडिया अछि एंड देन ऑक्युपायर कोन करिवो तको अपॉइंट करिवो
कमिटी करिवो अपॉइंट करिवो सैलरी देबो सब किछ फिक्स करिवो सैलरी फिक्स करिवो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन मानिबो गवर्नमेंट रो काम करिवो का पई वर्कर मानक पई हला सेटा हला सेफ्टी ऑफिसर power to make rules regulation term condition any kind of change any kind of implementation doing by the state government ke karibo state government karibo so dear students this is the safety facilities regarding to factory act 1948 section 21 to section 41 is it clear to you बुझी गले कि पिला माने कोठी किछि डाउट अछि कि तो चटापट पचार दियो so we can cover the welfare chapter right now सेटा छोटटा अछि students Next कौन chapter हो ना madam. No, madam, हाँ, doubt. पूरा क्लियर ना वेरी Yes, गुड गुड मैडम हाँ 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 चैप्टर 1 ଆଉ 3 ର ସ୍ଲାଇड ଟିକେ ଖାଲି ସ୍ଲୋ ଶୋ करेइबे 1 1 out सेकंड 3 चैप्टर 1 तो मु पढेइनी किछि खाली इंपोर्टेंट डेफिनेशन नहीं देछि आगे एटा मैडम हला सही ना एटा नो मैडम एटा हां हां एटा ଟିକେ भलो के देखा मैम आज पीपीटी टा शेयर कर देबे पीपीटी एइना नहीं पाठ क्लास सरिला परे पूरा हेगला हो मैडम चैप्टर 1 रो जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 टा मैडम इंटरप्रिटेशन ता पूर्वरु जोटा सेक्शन 2 एटा की एटा को नाही मैडम नाही मैडम एटा नो एटा की यार पूर्वरे अछि यार पूर्वरु अछि मैडम दिस वन एग्जैक्टली ठीक है मैडम थैंक यू सो मच ओके हला तो आपन का सेफ्टी फैसिलिटी ओवर चलंतु वेलफेयर तो छोटटा अछि ताको कवर कर दबा वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट वर्कर आपण मान को मु पढेबिनी कारण ऑलरेडी हमर टाइम बहुत हम पाखरे कम चलंतु चैप्टर 5 प्रोविजन रिगार्डिंग टू वेलफेयर ऑफ वर्कर्स वेलफेयर फैसिलिटी मु कहिथिली प्रिंसिपल्स ऑफ वेलफेयर हाँ जेतले आपन को प्रिंसिपल मु पढेइथिली सेठी कहिथिली प्रिंसिपल्स ऑफ वेलफेयर सेठी मु कहिथिली पिला माने व्हाट including welfare facility we will discuss in a factory act 1948 one chapter is there say chapter को मैं भी कवर करूची हैला सेटा हमर स्टैंडिंग प्रिंसिपल रे गवर्नमेंट रखिछ तो चलंतु सेक्शन 41 रे हमर हेल्थ सरीला सेक्शन 42 टू 50 हैला वेलफेयर 41 रे हेल्थ सरी गला 42 रे कंटिन्यू कला वेलफेयर एमती पूरा कंटिन्यू करी करी का सब आगे सेक्शन जाइछ सेम ये अडॉप्ट करिवे हेल्थ रे जेते आसीबो सेफ्टी रे सेक्शन 41 टू 21 टू 41 लिखि देबे आउ से अनुसार पॉइंट लिख लिख जाबे नथिंग टू वरी अबाउट दैट हैला तो चलंतु सेक्शन 42 वॉशिंग फैसिलिटी माने कोन द फैक्ट्री हैव टू प्रोवाइड वेलफेयर फैसिलिटी इंक्लूडिंग वॉशिंग फैसिलिटी फॉर द मेल एंड फीमेल वर्कर plenty of and specific washing facility for the male and female worker so कौन करिवे मैम सेडी they can clean सुनंतु फैक्ट्री कौन करे जनरली every factory no having some uniform towards the male and female worker so जो यूनिफॉर्म समान को दिया जाइथिबो समान कौन करिवे ना समान निजरो ड्रेस पिंधि की फैक्ट्री को जिबे सेडी समान को यूनिफॉर्म चेंज करिवे देन यूनिफॉर्म आसिला बेले पुनी यूनिफॉर्म को रखि के निज घर को आसीबे so समान यूनिफॉर्म तो रास्ता यूज करि परिबेनी तो एथि पाई सो यूनिफॉर्म को सफा केमती करिवे फॉर दैट स्पेसिफिकली फॉर द मेल एंड फीमेल वर्कर so factory should provide the washing facility so that they can clean their uniform and they can also basically use the washing area properly हैला समाने निजो पाई भी यूज करिवे आउ यूनिफॉर्म भी मध्य समाने सेठी सफा करि परिबे section 43 said facility for storing and drying clothing जो यूनिफॉर्म को समाने सफा करले ता पई ताकू तो ड्राई करिवे सुखेइबे for that facility should be there where the worker they can dry their cloth and the facility should be there in a factory so that they can store their clothing no store पाई बोली थिबो तो store कौन clothing करिवे तो समान को गोटे गोटे एंती क्यूबिक दिया जाइथिबो सो सेट समान को सेल फोन आ कोन दिन राती बसी के सेल फोन रे गपिवे ना कोन सेल फोन समान को पर्स समान को पैसा समान को क्लॉथ जो पिंधि की जाइथिबे जो सब ये किछ इंस्ट्रूमेंट से क्यूबिक काल रे समान रखि के ताला पकेबे प्रति वर्कर को गोटे गोटे क्यूबिक सेमती अलर्ट करा जाइथिबे so they can store everything in that particular area से तांकर की को से मेंटेन करी
Hela, that is a section 43. Section 44, facility for sitting. Those workers are working in a continuous standing position. जो worker माने continuously standing position रे काम करंती, so the factory have to provide a sitting facility, no, so that the worker will not feel tired, right? Worker are tired. आपण को 8 घंटा ठिया हेगी काम करे. Can you do this? No, ma'am, I can't. So सेति पई कोन ना, if you will feel tired, so you can take rest sometime. हाँ सेति पई हमें sitting facility देतियो, बसी परिबे सोइबेन. हैला, तापर आसिला first aid facility. Section 45, first aid facility. Every factory have to provide first aid facility to the workers. First aid facility कोन मैम? कोरोना हमको first aid facility बहुत भलो भाबरे सिखेला. कोन कहिला ना, घर प्रत्येक लोक प्रत्येक घरे फर्स्ट एड बॉक्स रख. कौन रखिबो सेतिरे? ऑल द नेसेसरी मेडिसिन्स, जेमति कि आमे डेटॉल रखिथिबा सेतिरे, जेमति कि हमर बैंडेज थिबो, जेमति कि जत्ते प्रकार जर ठंडा खास जत्ते प्रकार यूजफुल थिंग्स थिबो नो, जेटा कि एनी धरन तो राति रे जर आसला सब तो मेडिसिन बंद, मेडिसिन स्टोर बंद थिबा, आपण को जाई पार नथिबे, कोन करिवे? चटापट सेट गोटे मेडिसिन खाइ दबा. राति रे धरन तो हमको लूज मोशन करे, दिन बेला सिना जाइके आनदबा, राति रे तो जाई परिबा ना. सो से जो राति रे धरंतु कोन कला ना, बहुत जोर से ये हला ना, निश्वास नहीं पालन, से कोन हम ठंडा मेडिसिन थिबो कि जहां भी दरकार सब किछि as per our requirement we have to maintain the first aid box, up to date medicine. Same things should be there in the factory. So factory should maintain the first aid box. But एठी कोन कहिला से हजारे लोक काम करछथि, गोटिए फर्स्ट एड बॉक्स कोउडी अछि, को गुटे कोन रे अछि, लोक भी जानि ना से गोटे फर्स्ट एड बॉक्स अछि. सेमती हबनी. से फैक्ट्री एक्ट कहला कि each 150 वर्कर, प्रत्येक 150 लोक रे गोटिए फर्स्ट एड बॉक्स दिया जिवो. So सेमती हमें कैलकुलेट कर दबा, if in our factory more than 1000 workers are working, 2000 5000 केते लोक काम करछन, सेतेटा फर्स्ट एड बॉक्स दिया जिवो. प्रत्येक एरिया रे फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाइछन, so that any kind of emergency small injury we can हमें ताको कोन करि परिबा, ट्रीटमेंट करि परिबा. Apart from these, more than 500 workers are working over a factory. The factory have to provide own ambulance facility. प्रत्येक 150 रे गोटे फर्स्ट एड बॉक्स, केते हजार लोक काम करछन्ती, कैलकुलेट करिकि फर्स्ट एड बॉक्स इंस्टॉल कर देबे. 500 रो अधिक लोक अछन्ती, ताहाले गोटे एम्बुलेंस निजर रखिबो, बाहर एम्बुलेंस पई वेट करिवनी, right? Ambulance must be there. That is under the section 45. Canteen facility, section 46. Canteen. Every factory have to provide canteen facility. Madam, केते लोक काम करथिले canteen facility दिया जिवो. If more than 250 workers are working over a factory, then the factory have to provide canteen facility. मैं 250 रो कम लोक थिले कोन canteen facility दिया जिवोनी? No. If less than 250 workers are working over a factory, whether the factory will provide canteen facility or not, it is a responsibility of the occupier. If the occupier providing canteen facility still to less than 250 workers are working, then it is a loyaltyness of worker, it is a greatness of a employer towards the worker. 250 ରୁ कम लोक अछन्ती, still canteen facility अछि, माने great employer ता कहै जिवो. But 250 ରୁ अधिक लोक अछन्ती माने factory have to provide canteen facility. It is compulsory. And who will manage the canteen? The occupier कोन काम, कोन डाली हबो, कोन भात हबो, कोन तरकारी हबो, occupier कोन मैनेज करिवो? No. For canteen managing committee should appointed by the occupier. And the canteen managing committee will fix the menu. तार बड़ा लंबा चौड़ा गोटे पूरा 3-4 पेज पर्यंत रूल्स रेगुलेशन सब अछि. कोन मेन्यू हबो, कोन वर्कर्स ये करिवे, केते वर्कर्स पेमेंट करिवे, एटा तो पूरा ये नै ना, कोन फ्री ऑफ कॉस्ट रे तो जाई कि सेठी बसी खाइबो ना, केते तमे पे करिवो, how much money you have to pay, how much contribution by the individual workers towards the food, कोन क्वालिटी रो फूड हबा दरकार. ऑफिसर मानक पई कोन कैंटीन, हम जतले नालको जाइतिलु सेठी गोटे एग्जीक्यूटिव कैंटीन अछि, गोटे वर्कर कैंटीन अछि. एग्जीक्यूटिव कैंटीन रे टिके सोफिस्टिकेटेड, तांकर नंबर ऑफ आइटम अधिक, तांकर प्राइस अधिक, कोन सेठी प्राइस लागि कि प्लस वेल सोफिस्टिकेटेड. वर्कर्स मानकर एसी लागिनी, फैन लागिची, टेबल चेयर सब पडिथिबो, सब किछि थिबो, बट तांकर नंबर ऑफ आइटम टिके कम, तांकर कंट्रीब्यूशन कम. It is not that profit making area. No, it is basically providing facility towards the worker and the employees.
दो से बाहर को गले टाइम वेस्ट हम से 8 घंटा भितर काम करेंगे सो से भितर सब फैसिलिटी दिया जाओ पूरा वेल फर्निश्ड वेल ये है कि ड्रिंकिंग वाटर थिबो टेबल पड़ी थिबो हां फैन लागि थिबो ता पई बोले बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन बहुत सारा अछि पिला माने जदी अधिक जानिया को चाहजो ताहाले लॉ बही को कवर करिवे 4-5 पेज रो कैंटीन पई मैनेजिंग पूरा रखा जाईची हला ताहाले एटा हला कैंटीन 46 शेल्टर रेस्टरूम एंड लंच रूम शेल्टर फैसिलिटी शेल्टर माने कोन कहिला दोस वर्कर्स आर वर्किंग इन ए ओपन एरिया हला खरा रे गवर्नमेंट कहला कि 11 रु 2 के काम करबेन खरा रे काम करछन पुनी फैक्ट्री एसबी पुनी जिबे बाहर फील्ड रे काम करछन सेति पय सेति कोन दिया जिवो शेल्टर दिया जिवो so that in case of rain in case of hot summer they can take rest in that particular area shelter restroom and lunch room प्रति फैक्ट्री रे जोटा कि पर चैप्टर रे तमर अछि वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट वर्कर रे से लिखा जाईची प्रति 5 आवर रे हाफ एन आवर रेस्ट आवर दिया जिवो 8 घंटा कंटीन्यूअसली गोटे लोक काम करबनी each 5 आवर हाफ एन आवर रेस्ट इंटरवल दिया जिवो ता छडा बहुत सारा रखा जाईची छोटो मोटो रेस्ट इंटरवल तो एठी हमें कोन करबा for that worker will take rest so restroom should be there lunchroom less than 250 workers are working canteen facility is not there 250 रो कम लोक काम करछंती कैंटीन फैसिलिटी तो नाही ताहले लोकटा कोडी खाइबो कोडी जोडी पला से बसी खाइबो ना कोन for that lunch room also provided by the factory the worker they can bring their tiffin and they can take their lunch in that particular area for that water provision drinking water provision sitting provision everything should be there एडा केतरे दिया जिवो if more than 150 workers are working over a factory shelter restroom lunchroom more than 150 workers are working over a factory then this facility provided by the factory have to provided by the factory crèche facility crèche for the women and their child the छुआ पई crèche ता काहा को दिया जे पिला माने ना women employee जे कि यूज करि परिबो तार बेबी पई केते लोक काम करथिले गोटे crèche facility दिया जिवो if more than 30 women workers are working over a factory 30 जण women worker factory काम करचंती more than 30 women workers then the factory have to provide crèche facility रो 4 पेज पूरा रूल्स रेगुलेशन अछि राइट crèche कोन हितिबो ना सी crèche facility 30 women more than 30 women workers are working occupier have to provide the crèche facility inside the factory and nearest to the factory nearest माने just factory को attach हेके थिबो crèche where the women worker एटा maternity benefit रे मध्य मु कहिबी तार गोटे crèche रो स्पेशल प्रोविजन अछि सेठी where women worker the women worker can basically जो crèche ता थिबो the women worker can move in that particular area quickly say type of crèche दिया जाय थिबो and the baby can be there 6 months to 6 years 6 मास रे women worker after maternity benefit ता केते मास 6 month पर जेतेले maternity benefit रो women worker आसीबो तो 6 months to 6 year baby रहिबो crèche for that the occupier have to provide every facility related to crèche pure drinking water how kette liter drinking water debo kette liter general water से यूज करबा पर डे kette quantity रो मिल्क पीबो से छुआ कोन फूड रहिबा दरकार मेन्यू रहिबा दरकार apart from this nurse and attendant kette छुआरे kette nurse attendant रहिबे kette परिमाण रे से एरिया टा हेइथिबो जोथिरे कि कोन सोइबा पई तार खेलिबा पई तार खाइबा पई एंटायर जिंस पई तार प्रोविजन थिबो आज का डेट रे पिला मान देखिबो एयरपोर्ट मान करे सब क्रेच देलानी गवर्नमेंट नो आज का एयरपोर्ट को तो माने हमर एंटायर सेटा रहला हमर सेंटर कंट्रोल करूची हला सो स्पेसिफिकली एयरपोर्ट रे क्रेच फैसिलिटी देलानी जो थिरे कि जो 4 घंटा वेटिंग आवर रे छुआ जमती कि हैरान हबनी जाई कि सेठी खेलिबो सेठी के रेस्ट नबो सेठी पई एयरपोर्ट मान करे क्रेच फैसिलिटी इते सुंदर लागुची ओ कोहन सब एयरपोर्ट देनी बट मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट रे क्रेच फैसिलिटी दिया जाई राइट सो सेठी कोन करा जाउची ना क्रेच फैसिलिटी जदि आउरी अधिक जानिबा को चाहउचंती ताहाले आपण आईएल बही को
फॉलो करिवे तार केते क्वांटिटी रो क्षीर दबा दरकार केते क्वांटिटी रो जनरल वाटर केते क्वांटिटी रो ड्रिंकिंग वाटर कि केतेटा छुआ रे केतेटा अटेंडेंट एंड नर्स हला से सब रहबा दरकार बट अल्टीमेटली मोर देन 30 women worker one means the factory have to provide the crèche facility specifically towards the women and the 6 month to 6 year the baby can be there in the crèche हे गला एटा आपनकर कवर अब कोठी ब्रेक पी नर्सिंग ब्रेक पी इथरे अछि माने आपनकर केते टाइम ब्रेक जीवो सेटा हमें पढिबा कोठी हमर मैटरनिटी रे हला वेलफेयर ऑफिसर हु इज द वेलफेयर ऑफिसर आज लाइक आज सेफ्टी ऑफिसर ता माने सेफ्टी ऑफिसर जे मैडम वेलफेयर ऑफिसर से ना रूल्स रेगुलेशन टर्म कंडीशन फॉर वेलफेयर ऑफिसर रूल्स रेगुलेशन टर्म कंडीशन फॉर द सेफ्टी ऑफिसर इज सेम बट one safety officer can appoint by the factory if more than 1,000 workers are working. But in case of the welfare officer, more than if in a factory more than 500 workers are working, then the factory have to appoint a welfare officer. Safety officer 1,000 rasibo, welfare officer 500 rasibo. Hela. If less than 500 workers are working over a factory, can the welfare officer appointed by the occupier? No. Then who will take care? The section 42 to 50. That is the ultimate controller over the factory. Occupier responsibility. Occupier आपको control करिबो. Occupier आपको manage करिबो. काको? Welfare condition. So dear students, the rules, regulation, term, condition for the safety officer, rules, regulation, term, condition for the welfare officer, it is same. But safety officer can appoint in case of 1,000 workers, welfare officer will appoint in case of the more than 500 workers. Same calculation is there. 500 to 2,500, one welfare officer. 2,500 to 3,500, one welfare officer and one additional welfare officer. एमती कहि के calculation पूरा हे का जायछि जेते हजार लोक काम करछन्ती तार calculation अछि पूरा देखि पारे हैला power to make rules, any kind of rules, regulation, any kind of modification, any kind of change, that is the ultimate controller by the state government. State government तारो rules को fix करिबो, state government तारो rules को ये maintain करि पारे, right? तो एटा हला हमर कोन ना related to welfare section 42 to section 50. Dear students, any doubt? कोठी भी को point रे भी किछि काहर doubt अछि कि ना clear समस्तन को पिला माने Ma'am, canteen facilities should be there for more than 250 workers. 50 workers, yes. Yes, madam. Okay, ma'am. And the facilities, ma'am? Each 150 worker. Canteen facility, more than 250 worker. If working in a canteen, then the factory have to provide the canteen facility. But in case of hosted facility, each 150 worker, one hosted facility. It means in a factory, 1,000 workers are working. So each 151 hosted means 1,000 person. How many hosted workers the factory have to provide? Just it is the calculation. Each 150. And ma'am, ambulance facilities for? Ambulance facility for if more than 500 workers are working. Okay, 500 अधिक लोक काम करते हैला आउ शेल्टर रेस्टरूम लंच रूम 150 workers, more than 150 workers. Crèche facility, more than 30 women workers. हैला welfare officer, more than 500 workers. 500 अधिक लोक काम तर calculation सेमती हैला 500 to 2,500, one 2,500 to 3,500, one welfare officer, one additional welfare officer. एमती करी करिका से calculation है का जिप हैला power rules regulation किए करिवो state government करी state government controlling authority. Center रे एठी involvement नाही बिल्कुल नाही center रे कोडी involvement रहइबो पिला माने only hazardous work hazard use work ता पई बोली गोटे स्पेसिफिकली एठी गोटे अछि एटा आपण मानको जदी आपण माने कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर करछन्ती ताहाले करिवे आमे इते माने कवर करि परिबन सेत पे म करूनी एठी देखंतु एठी गोटे चैप्टर अछि देखि परिबे सेक्शन 4A सेफ्टी देला सेक्शन 4 सॉरी चैप्टर 4 रे सेफ्टी फैसिलिटी अछि चैप्टर 4A रे देखंतु गोटे अमेंडमेंट है कि इंट्रोड्यूस करा जायछि चैप्टर 4A माने एटा हला अमेंडमेंट
amendment की introduce ହେଇଛି provisions relating to hazardous process ता माने एई केवल hazardous माने कौन कहले बहुत डेंजरियस डेंजरियस खतरनाक सो जो काम करे केवल सेंटर इंटरफियर करी बाकी जितने सब जिंस अछि that is the controlling authority is the respective state government clear ना पिला माने पूरा clear ना Factory Act students Yes, ma'am. okay Madam, तो excuse me. dear Madam, students को madam, जदि हाँ ए सब एग्जाम रे पड़िबो आमे एगुडे सब डिस्क्रिप्शन करिवो धन्य अपन जेमते सब कहिले सेही सब गुडा सब पॉइंट लिखि कि डिस्क्रिप्शन करियो मैम धरंतु फॉर एग्जांपल मु कहूची आपन को आसी गला सेफ्टी फैसिलिटी briefly explain the safety facility provided by factory under the Factory Act 1948 क्वेश्चन गोटे आसे हैला तो आपन कोन करिवे फर्स्ट हेडिंग दे देबे सेफ्टी हैला टिके इंट्रोडक्शन दे देबे फैक्ट्री ऊपर the factory act the first factory act was passed in India 1881 then it was enacted in the 1948 factory the provision relating to factory to provide health safety welfare facility एमति टिके इंट्रोडक्शन दे देबे इंट्रोडक्शन ता सबुडी रहइबो तापर सेफ्टी स्टार्ट कर देले हेडिंग दे देले सेफ्टी ऊपर लिखि देले हेडिंग पाखरे सेक्शंस 21 to 41 बस हे गला तापर पॉइंट 1 2 3 4 करी करी का ताको पॉइंट 1 फेंसिंग मशीनरी कोन ता माने दी लाइन पॉइंट 2 14 मार्क रो क्वेश्चन बाबू 14 मार्क कते 12 मार्क रो क्वेश्चन तो 12 मार्क रो क्वेश्चन माने तो आपन को 4 पेज 5 पेज लिखिया पड़िबो ना तो आपको 2 लाइन एक्सप्लेन करी करी जिबे इन योर ओन वर्ड बुझी गले से जिंसटा कोन ओन वर्ड रे दुई ऊपर तळ धरंतु हे गला गोटे पॉइंट एमती किछ ब्लंडर हे गला नथिंग प्रॉब्लम इज दैट आरामली कूलली सेक्शन भी से भीतर मेंशन करबा दरकार नै ऊपर खाली सेक्शन मेंशन कर दे हैला सेक्शन से भीतर मेंशन ऊपर तळ भी पॉइंट हेले भी चलिबो ताको खाली एक्सप्लेन से व्हाट इज एडी थिबा दरकार आ सेफ्टी रे आपण आनी कि वेलफेयर लिखिबे हेल्थ रे आपण नै कि सेफ्टी लिखिबे हबो कि जोउतरे सेटा लिखिबे ऊपर तळ ऊपर हेले चलिबो आपण निजो लैंग्वेज रे ताको एक्सप्लेन करबे दैट्स इट ठीक ना एना क्लियर ना आगे मैडम आगे थैंक यू मैडम ओके तो डियर स्टूडेंट्स आपण मानकर फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 120 सेक्शन 11 चैप्टर आउट ऑफ एट लिखाई छि आपनकर आउट ऑफ आमे आपनकर पांचटा चैप्टर पर्यंत कवर कले फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन रे सब दरकार नै जोटा दरकार मु आपनको पढै देछि second chapter inspecting staff already I have covered third chapter health facility section 11 to section 20 already I have completed fourth chapter safety section 21 to section 41 already I have completed fifth chapter welfare section 42 to 50 it is a very small chapter already I have completed I hope समस्त को पूरा क्लियरली बुझी जाइथिबे and you can do best in your examination Ma'am, one question is in provision regarding safety, the power to make rules is by state government. Power to rules made by the state government. In case of only section chapter 4A, already I told you, chapter 4A, provision regarding to hazardous work, there central government interference is there. So पूरा अच्छी ता लिस्ट मैडम जदि आपण जिबे आपणकर कोन जे हमर ये कोठु आस्तिबे कहिले सब केते लोक कोठु आस्तिबे जेमति कि सेंटर रु आस्तिबे 4 लोक 5 जण थिबे फॉर एग्जांपल स्टेट रु एतिकी थिबे हेल्थ डिपार्टमेंट रु एतिकी थिबे हां मेडिकल डॉक्टर रु एतिकी लोक आसीथिबे जेमति मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रु एतिकी आस्तिबे टाउन प्लानिंग ऑफिसर एतिकी थिबे एमति करी कि तार गोटे लिस्ट देछि ए सब लोक से एरिया रे थिबा नियाति दरकार समस्त एनालिसिस करिवे से सिचुएशन को हाजरियस वर्क सेठी सेंटर इंटरफेयर करबो बाकी सब कंट्रोल करबो स्टेट रेस्पेक्टिव स्टेट नाउ क्लियर ना Yes, ma'am. Thank you. ओके ओके तो चलंतु थैंक यू सो मच आपण मानकर यूनिट 2 कंप्लीट हे गला हला काली कि मु आपनकर यूनिट 1 स्टार्ट करिवि यूनिट 1 दा किछि एक्ट नाही सेडी केवल इंडस्ट्रियल रिलेशन कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड डब्ल्यूपीएम अछि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हला तो सेठी आपण माननको मु चटापट कहि देबी सेठी गोटे यूनिट हमें ट्राई करबा काली कि पूरा कंप्लीट कर देबा पई कारण सेटा बहुत माने खाली सेतिर किछि एक्ट आ ये नाही सेक्शन नाही इंडस्ट्रियल रिलेशन कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड डब्ल्यूपीएम आपण थैंक यू स्टूडेंट्स बाय बाय हैव ए गुड डे Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू Thank you. डियर
Thank you.